So yes, let us begin. So today we have all gathered here virtually to celebrate the occasion of International Women's Day. Every year, International Women's Day is celebrated on March 8th to spread the message of gender equality and to work together in making a better society where there is no gender bias. This year, the United Nations declared the theme of the day as Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. The Constitutional Club, Directorate of Student Welfare of Guru Gobind Singh Indraprastha University, has been one of the premier student-run societies led by the active cooperation of the faculties in charge, committed towards the enlightenment of the general citizenry of the nation and the students alike towards national outlook, constitutional thought, and the inculcation of collective consciousness by means of variegated activities and projects undertaken by it in the past years. To commemorate this landmark day, the Constitutional Club, under the Directorate of Student Welfare, Guru Gobind Singh Indraprastha University, has organized a poetry competition. Before we begin with the competition, let us take a few minutes to familiarize ourselves with the panel of judges who will be grading the participants of this competition. The honorable panel consists of Mr. Jasdeep Ahuja, Ms. Akanksha Chandhok, and Mr. Sugandh Bhatia. We are pleased to welcome you. Thank you, honorable judges, for gracing the event with your presence. Moving on to the rules of the competition, participants note that all participants should note that they have a time limit of 2 to 2.5 minutes and they would be judged on the relevance to the theme, creativity, style, originality, coherence of form and structure, harmony of words, presentation, clarity of imagery and language. The participants will be called one by their names. They can recite the poem in either Hindi or English. All participants will be given a certificate of participation. It must be noted that the decision of the judges pertaining to the winners of the competition would be final and binding. Now, without further ado, let us begin with the competition. Our first participant will be Parul Mahajan. Just a small intervention. I request the participants to switch on their camera and then they can speak also. Yes, please go ahead, Parul. Hello everyone, I'm Parul Mahajan. I'm a second year law student. The poem that I'm about to present today not just talks about problems that women face, it also has an empowering tone to it. And I would also like to give a trigger warning before it because it can be a little overwhelming for some people. And I hope everybody enjoys. Here I start. I knew that to tell a little girl what sorrows she must save herself from, I'd have to go through them first. To be a veteran for her questions, when she says, why does it hurt? I must remember what hurt felt like. I must tell her how it is going to be okay. She won't believe me, hands crawled in as if she forgot they were wings all of a sudden, feeling the weight of only her heart, she will scream. You do not know what I'm going through, and I will not. Despite the times I myself took my hands in as if I forgot they were wings, the times I looked at the sky and could find no distance between its heavy weight and my heart's surface, the time I had to walk back to my house with no footwear on just because I wanted to feel what it felt like to feel something, I will not know. So I ask you, do you ever think of me, little girl? When you look at women with long hair, skin that shines like moonlight, bodies that could fit hourglasses, do you only think about how many men would love them? Do you imagine being a violin player, the best that the people have ever witnessed? Do you ever think of becoming a writer, aspire to be your own devastation? I'll tell you that the truth will hit you hard one day. As you sit by the table with a cup of coffee, you will see that you had always wanted to be the most loved, the most admired, the most looked up to, because you thought of your hero as someone who wears a cape and takes you away from this castle. You prayed for him, lost the idea of him the first time men on the streets called you a slut, came back home crying because nobody would care to do something about it, wore all you could and covered yourself so no one could call you that again, wept. And even then a man groped you at a party so tight you couldn't breathe, told your parents and they asked what you had been wearing. Did you sleep that night? I'm sorry, this
There's a lot of disturbance from my side. I'm really sorry for that. I'll continue as I was speaking. Unable to wash those hands off your body, it took a while, I know, to accept it was your fault. When the first man who touched you, thinking he was the first to touch you, you fell for him because he asked, because it was a privilege. You searched for your hero everywhere but couldn't find him. So tell me, who woke up after that sleepless night to write a poem? Who is here surviving through it all? It is you, brave girl. It has always been you. Thank you. Thank you, Parul. Next up, we have Vandana. Also, I request all the participants to tell their name first so that there is no discrepancy in the marks. Yes, first of all, I would like to wish good evening to all of you present here. My name is Vandana Haldar, and I wish happy International Women's Day to all the women here. I'm going to recite a Hindi poem, and the title of my poem is Nanhi Pukar. So I'll start. जिंदगी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, सबने कहा था. जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, सबने कहा था. पर जिंदगी कैसे खूबसूरत हो किसी ने न बताया न सिखाया था. भेड़ बकरियों की तरह छोड़ दिया गया हमें. चले सीना ताने ढूंढे जिंदगी हमने. कभी ठोकर खाई तो कभी गिरे मुंह के बल हम. पर जाना अनमोल जिंदगी कदम कदम पे हम. कितनी मुश्किलें उठाई ना देखा कोई और देखेगा कब. देखेंगे तो बस किस मंजिल पे पहुंचे हैं हम. ना खूबसूरती को तराशा हमने, ना ख्वाहिशों को दिए पंख. फिर क्यों कहते हैं लोग बदचलन हैं हम. ना किसी को दुख दिया हमने, ना किसी से किया कभी शिकवा. फिर क्यों बन बैठे काटे हम. अरे कोई तो बताए कि कैसे जिए हम. घुट के या खुल के जिए हम. घर से बाहर पैर रखा तो कलंक बने हम. घर में रहे तो नालायक और शादी करके मनहूस बने हम. जुल्म उठाए हम और चुप भी रहे हम. विनाश हो तो हम सहन करें तो देवी बने हम. क्या नहीं देखा हमने, क्या नहीं सहा हमने. अरे ओ पापियो सीता द्रौपदी की तो कहानी सुनाते हो. उन्हें समझ लिया होता तो नहीं कहना पड़ता आज मुझे हम. थैंक यू. Thank you, Vandana. Next up, we have Astha Joshi. Is the participant present here? All right, moving on. Next up, we have Adya. Next up, we have Ashish. Yes, please unmute Yes, ma'am. yourself. Yes, you may now begin. This is Ashish Bugadia. Yes, ma'am. Just a minute. First of all, good morning, good evening to everyone. Happy Women International Day to everyone. आज की मेरी कविता का शीर्षक है झांसी की रानी. सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई है. तो शुरू करता हूँ. सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भरकुटी तानी थी. बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी. गुमी हुई आजादी की कीमत सब जानी थी. दूरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी. चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी. बूंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी. नाम लक्ष्मीबाई, पिता की वह संतान अकेली थी. नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी. वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी. बुंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी.
हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, लक्ष्मीबाई का ब्याह हुआ, रानी बनाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियारी छाई, काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींची, द्वंद हुआ होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कर्तव्य भारतवासी, यह तेरा बलिदान जो जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे चाहे सच्चाई को फांसी, हे मदमाती विजय मिटा दे गौरव से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तो खुद अमिट निशानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you so much. Next up, we have Ataf Ali. Hello. Good evening, everybody. Happy Women's Day to all of you who are present here. तो ये एक हिंदी पोएम है जो मैंने लिखी थी। तो it was like, हाँ तो औरत कहने को तो ये एक लफ्ज भर है, उससे जाके पूछो कभी तजर्बों का समंदर है। ये वो आईना है जिसमें देखे कोई तो संवर जाए, ये वो आईना है जिसमें देखे कोई तो संवर जाए, ये तकदीर के खाली पन्नों पे लिखा हुआ मुकद्दर है। ज़माने को लेकिन इसका ओहदा व कद कहाँ दिखाई देता है, ज़माने को लेकिन इसका ओहदा व कद कहाँ दिखाई देता है, शायद इसलिए कि नंगी आँखों से सूरज कहाँ दिखाई देता है। वो एक माँ है जिसको हमारी भूख प्यास का ख्याल हमसे ज़्यादा है, वो एक बहन है जिसको हमारे दुखों का मलाल हमसे ज़्यादा है, वो एक बीवी है जिसका आधा हिस्सा खुद हमें बसर करता है, और वो है एक बेटी जिसके सदके खुदा हमें खुशियाँ नज़र करता है। वो हर वक्त काम में है, चाहे दिन ढल या निकल रहा हो, वो उस वक्त भी खाना बनाती है जब बर्तन से ज़्यादा उसका बदन जल रहा हो। वो जो कर जाती है मर्द कह भी देता काश तो नहीं कर पाता, जितना वो कर जाती है ना खुद पे उतना बर्दाश्त तो नहीं कर पाता। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Next up, we have Chandan. Am I audible to everyone? Hello? Hello? You're audible. Okay. So, good evening, everyone. First of all, I would like to give many wishes for International Women's Day. Before starting my poem, I would like to give a brief description that I am pursuing my BTech in Information Technology, and I am not living with my parents. I am living by myself in the city. और मेरी जो पोयम है वो डेडिकेट मैं करता हूँ अपनी मदर को, ये बताते हुए कि क्या वर्थ है एक माँ का मेरे जीवन में, और क्योंकि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ तो क्या हाल है मेरा, ये मैंने अपनी कविता के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश करी है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगे तो एक बार आप प्लीज लाइक फिंगर से क्लैप करने की कोशिश कीजिएगा एट द एंड ऑफ माई पोयम। सी इट्स स्टार्ट्स लाइक दैट। सुबह हो गई, देखूं क्या क्या बचा है, इस कैदी जैसे कमरे में क्या क्या रखा है। बिखरी किताबें हैं, गिरे बर्तन, मटमैला बिस्तर, कुर्सी पर तो कपड़ों का पहाड़ सजा है। तुम होती तो शायद यूं ना होता, मैं भी दोपहर तक यूं ना सोता, ये पर्दे भी इतने काले ना होते और खिड़की पर ये जाले ना होते। तुम होती तो अब तक मुझे डांट सुना चुकी होती ना, आलू का पराठा गरम सी रोटी बना चुकी होती ना, ये रसोई भी यूं कबूतर खाना ना होता, आज फिर से ना नहाने का मेरे पास बहाना ना होता। इस खंडर में अब कहाँ मन लगता है, मेरे देर से आने तक कहाँ कोई जगता है, कहाँ किसी को मतलब है मेरे कहीं जाने से, खाना ना खाने से या रूठ जाने से। तुम होती तो मुझको यूं रोता देख हंसा चुकी होती ना,
पल्लू से आंसू पोंछ गले से लगा चुकी होती ना। तुम भी तो चूड़ी पहनती हो ना, पर तुमने तो कभी खुद को नहीं रोका किसी काम को करने से। लोग कहते हैं जिन कलाइयों में चूड़ियां होती हैं वह कमजोर होती हैं, पर इन्हीं कलाइयों में तो चूड़ी पहन के तुमने मुझे बड़ा किया है। मैं झूठ कहता हूँ सबसे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, सच कहूँ तो तुम सा बनना चाहता हूँ, जो कभी रुकती नहीं, कभी थकती नहीं। अब समझ आता है क्यों इतने विश्वास से लोग कह देते हैं कि जिस दिन मैं तुम्हें हरा दूंगा उस दिन तुम जीत जाओगी। शायद तुम्हें मालूम है कि तुम्हें मैं कभी नहीं हरा सकता। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much for the wonderful poem, Chandan. Next up, we have Bhatia Chaudhary. Is she present here? All right. Gursharan Kaur, next up. Hariom Krishna. Ishan Dhyani. Jia Mehta. Yes, I'm here. All right, Jia, go ahead. I hope I'm sufficiently audible and visible. Yes, you are. First of all, a very happy Women's Day to everyone present here. And I have a poem in Hindi, which I've recently written. And the title is Nari Deti Hai. नारी की कहानी, नारी की जुबानी बहुत सुनी होंगी, पर ये कहानियां कविताएं सुनने सुनाने से नारी को उसका स्थान नहीं मिलता। यह पर्दा तुम्हारा कैसा है? क्या ये मजहब का हिस्सा है? कैसा पर्दा, किसका पर्दा? ये सब मर्दों का किस्सा है, ये सब मर्दों का किस्सा है। पर्दा हटा देने से सशक्तिकरण नहीं मिलता, पर्दा हटा देने से सशक्तिकरण नहीं मिलता, नारी देवी है कह देने से उसे सम्मान नहीं मिलता। रोते क्यों हो, मर्द बनो, रोते क्यों हो, मर्द बनो, ये कह देने से आंसुओं का हिसाब नहीं मिलता। अरे लड़कियां तो आंसुओं को हथियार बनाकर बहाती हैं। ऐसी सोच रखने वालों, उस हथियार से बचकर क्या तुम्हें स्वर्ग नसीब हो जाएगा? बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। भला अपनी ही बेटी को कोई छेड़ता है? भगवान का रूप होती हैं बेटियां। दुर्गा, भवानी, देविका नाम रख देने से उन्हें वो दर्जा नहीं मिलता। नारी देवी है कह देने से उसे सम्मान नहीं मिलता। रिद्धि सिद्धि समृद्धि लाती हैं बेटियां, लक्ष्मी का रूप होती हैं, और हाथ आई लक्ष्मी की कौन कितनी संभाल करता है ये तो सब जानते ही हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मात्र बेटी पढ़ाने से जिंदगी का सार नहीं मिलता। इस संसार में नारी की प्रगति का फूल नहीं खिलता। बेटों को सिखाओ यूं नारी का अपमान ना करना, कि केवल किताबें पढ़ा देने से सोने का किरदार नहीं मिलता। शर्म कपड़ों में नहीं आंखों में होती है, इज्जत हाथों में नहीं बातों में होती है। जी करने से कभी सत्कार नहीं बढ़ता, नजरें झुका लेने से गौरव नहीं घटता। लड़की है, नाजुक है, फूल सी कलियों सा सजा कर रखना। कमाल की ये प्रणाली है तेरी ए इंसान, फूल है मुरझा जाएगा, मनुष्य के दुष्कर्मों से जरा बचा कर रखना। दुनिया घुमाओ के नारी सा साथी नहीं मिलता, दुनिया घुमाओ के नारी सा साथी नहीं मिलता। किस्मत का साथ दुनिया कब छोड़ देती है, संदेशा नहीं मिलता। वक्त है संभल जाओ, अभी भी वक्त है संभल जाओ। जीवन कैसे जीना है इस बात का इल्म नहीं मिलता। शब्दों से तो लोग सोने में जड़ा देते हैं, शब्दों का कोई अंत नहीं मिलता। मंदिरों में नारी को पूजने से सत्संस्कार नहीं मिलता, नारी देवी है कह देने से उसे सम्मान नहीं मिलता। मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर खड़े हो जाने से इंसाफ नहीं मिलता, मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर खड़े हो जाने से इंसाफ नहीं मिलता। नारी देवी है कह देने से उसे सम्मान नहीं मिलता। धन्यवाद। Thank you so much, Jia. Next up, we have Kartikeya Arora. Yeah, a very good evening to everyone. This is Kartikeya Arora, a first-year student from USLS. And
very happy International Women's Day to everyone. So my poem, I just wanted to ask the judges, am I not allowed to share my screen? Because I just created a title page for my poem, if that's allowed. Yeah. So can I share my screen? Just wanted to ask. No issue, you can share. Vani, are the Thank you. participants allowed to share the screen? Kartika, you may proceed with sharing your screen. Thank you. Is it visible? Yes, your screen is visible. Yeah, so this poem is called Wondrous Woman. So I'll basically give a brief about it before actually putting it out. This is specially curated for all the hardworking, aspiring, and wonderful women that have been with in my life, and I have seen in the society. So here I am with the poem. Just a second. From a daughter to a sister to a mother, epitomizing such divine roles like no other. To the ship of life, a predominant rudder. Then why is it that their prominence makes the patriarchy shudder? Through the ages of Greeks and Romans, why was the dominance of women seen as an ill omen? Why was their pride stolen? In the depths of our own ancestry, the kings of kingdoms having a royal life and rich tapestry. Why is it that the significance of woman is still a mystery? They say behind every successful man, there's a woman. But when crossing the hurdles to the darkness of den, transcending the posts and positions, reaching the zen, stands a woman. Who is it that's behind her then? Culminating her life in the nascent womb, even before she's alive, engraving her tomb. Why such thoughts the vicious minds of society loom? Such savage ideas leading only towards our own doom. From the plethora of majestic goddesses we pray, to being subject to inhuman crimes astray. We listen to it, and alas, we say, but do we search for a way? For such heinous crimes, can justice be served on a tray? Similar to the colors that seep deeper, woman arose from just being a quiet weeper, from just a housekeeper to taking diverse roles of a wicket keeper or a goalkeeper, growing like a creeper, making their sufferings as a pout. Just when the misogynist thought it doesn't count their vote, they began wearing the black and white coat. Having endured the difficulties they had to face, breaking the shackles of the glass in which they were encased, today they stand at the top with grace. Their contributions to society's embrace. It's as if the ferocious patriarchal chase has given them more strength and pace. They say the empowerment is for betterment, but even today, many don't find a space for their feelings to vent. The society hasn't repaired all its debts. Status quo is much better for sure, but there's the need for a lot more to eliminate the issue from the very core, so that one day all of us soar in a future that has much more in store. Thank you. Thank you so much. Next up, we have Thanks, Khushi. Sorry to interrupt. Karthike, whether it is self-composed? Yes, sir. Okay. Is Khushi present here?
Next up is Mohit Kumar. Naina Dubey. Is Naina present? Hi, yes, I'm here. All right, Am you I may begin audible? with your poem, Naina. Yes, you're audible. Yes, sure. सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। मैं नैना दुबे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय की MA इकोनॉमिक्स प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज मैं आप सभी का ध्यान एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। समस्या है घरेलू हिंसा। आज भी इस समस्या से संबंधित कुछ इस प्रकार की खबरें सुनने को मिलती हैं। भारत में लॉकडाउन के दौरान भी घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि रही। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी, यूरोप में भी 60% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार रहीं। WHO ने समस्या के बढ़ते आंकड़ों को देखकर चिंता भी जाहिर की और बीते वर्ष भारत में चंद ही महीनों में 1477 घरेलू हिंसा के मामले सामने आए, जो कि पिछले 10 वर्षों में सबसे अत्यधिक है। रिपोर्टिंग के दौरान ये भी पाया गया कि इस समस्या से ग्रसित 86% महिलाएं कभी मदद की गुहार नहीं लगाती, ना इस बात का जिक्र करती हैं। 14% पीड़िताओं में से केवल 7% ही ऐसी हैं जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता ली। आज समाज में नारी शक्ति का जागरूक होना सराहनीय योग्य है, किंतु आज भी कुछ महिलाएं कभी समाज के भय से तो कभी रिश्तों को निभाने के बंधन से घरेलू हिंसा जैसी क्रूर समस्याओं के विरुद्ध आवाज उठाने से झिझकती हैं। मेरी ये कविता उन्हीं महिलाओं के लिए एक संदेश है, एक उम्मीद है और नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक पुकार है दिल में दर्द कितना उसकी नजरें बता देती हैं, है दिल में दर्द कितना उसकी नजरें बता देती हैं, शायद इसी डर से वो जमाने से नजरें चुरा लेती है। ठीक उसी तरह जैसे छुपाती है दुपट्टे से जला हाथ, जैसे ढक लिया करती है पल्लू से चांद से चेहरे पर लगे दाग, करती है सभी नियम धर्म का पालन, नन्ही सी उम्र में पतिव्रता बनती है, मांगती है उसकी लंबी उम्र की दुआ जिस व्यक्ति से वो प्रेम तक नहीं करती है। कभी सोचती हूँ किसके लिए सहती है इतना, क्यों आवाज उठाने से डरती है, किस समाज की लाज में खुद को ही समझा लिया करती है। कभी जरूरत करने का जी होता है, सोचती हूँ छुड़ा दूं उसका ये पिंजरा जिसे वो घर समझती है, दिखा दूं आजादी के सपने, चखा दूं आत्मनिर्भरता की हवा, पर क्या वो भी इनकलाब की हिम्मत रखती है। क्या करूंगी अगर झिड़क देगी मुझे, क्या करूंगी अगर झिड़क देगी मुझे, नहीं सोच पाएगी बंदिशों के परे। कैसे आएगा बदलाव, कैसे आएगा बदलाव जब शक्ति स्वयं ही प्रताड़नाओं के बीच बैठी है हाथों पे हाथ धरे, बैठी है हाथों पे हाथ धरे। धन्यवाद। Thank you so much. Next up, we have Navya Singh. Hi everyone. Am I audible and is my video clear? Yes. You're audible. Hi everyone. I am Navya Singh और मेरी कविता का शीर्षक है किसी ने बताया ही नहीं और and this is a self-composed poem. So here it starts. कहते हैं इंसान को इंसान उसकी भावनाओं ने बनाया, पर इस दुनिया ने तो भावनाओं पर भी जेंडर का ठप्पा लगाया। गुस्सा, ताकत, हिम्मत एक मर्द का गौरव है, तो वहीं दया, ममता और धैर्य एक औरत की शोभा। पर जो करी किसी ने जुर्रत इस पत्थर की लकीर को बदलने की, तो अंजाम कुछ ऐसा होगा। अरे तू तो लड़का है, लड़की की तरह क्या रोता है। किसी ने बताया ही नहीं कि दर्द तो मर्द को भी होता है। और ना जाने ये कैसी समझदारी है, और ना जाने ये कैसी समझदारी है जहां औरत से तुलना की जाना आदमी के लिए एक गाली है। बचपन से सुनी एक ही प्रेम कहानी कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिल गए खत्म कहानी। किसी ने बताया ही नहीं कि प्रेम कहानी सिर्फ राजा रानी की हो, ये कोई जरूरी नहीं। प्यार तो रानी को भी एक रानी से हो सकता है, दिल तो राजा का भी एक राजा पर आ सकता है। किसी ने बताया ही नहीं कि कब, किससे और कैसे प्यार करना है, ये कोई और तुम्हें कैसे बता सकता है। जहां एक तरफ भगवान अर्धनारीश्वर के लिए पूजा की थाली, भक्तों का प्यार, फूलों का हार है, तो वहीं ट्रांसजेंडर के लिए दिल में घृणा, जबान पर गाली और आंखों में बेहिसाब तिरस्कार है।
किसी ने बताया ही नहीं कि एक ही ईश्वर की बनाई दुनिया में क्यों इतना भेदभाव है। तो चलो आज करते हैं बात, रखते हैं कुछ बातें साफ साफ। प्यार, आजादी, इज्जत हर इंसान का हक है, किसी एक लिंग का नहीं। अपना नजरिया जरा बदलते हैं ताकि फिर किसी को ये ना कहना पड़े कि हमें किसी ने बताया ही नहीं, कि हमें किसी ने बताया ही नहीं। धन्यवाद। Thank you, Navya. Next up, we have Pallavi Bhatia. Is she present? Yes, am I audible? Yes, you're audible as well as visible. You may now begin your poem. Okay. Hi everyone, I am Pallavi Bhatia and I'll be presenting a self-composed poem जिसका शीर्षक है मैं ही सृष्टि का अवतार हूँ। मैं ही अंत, मैं ही आरंभ, मैं ही तो सृष्टि का संचार हूँ। मैं ही दुर्गा, मैं ही सरस्वती, मैं ही तो पृथ्वी का आकार हूँ। मुझसे शक्ति, मुझसे भक्ति, मैं ही तो सृष्टि का अवतार हूँ। जन्म मुझसे, मृत्यु मुझसे, मैं ही तो ममता का उपहार हूँ। मुझ में माँ, मुझ में बेटी, मुझ में बहन, मैं ही तो संसार हूँ। मुझसे तुम, मुझसे तुम्हारा वंश, मुझसे ही तो परिवार है। मैं इज्जत, मैं ही शर्म, मैं लाज, मैं ही लांछन, मुझसे ही तो समाज में सम्मान है। तुम्हारी इज्जत मुझसे है, बदनामी भी मुझसे है। तुम्हारी कामयाबी के पीछे मैं, तुम्हारे जन्म के पीछे मैं, पर मेरे नाम के पीछे फिर तुम्हारा उपनाम क्यों? काम जब बराबर है तो पैसे मेरे कम क्यों? दर्द जब बराबर है तो आंखें मेरी नम क्यों? रेप करे कोई और, बलात्कारी कोई और, पर इज्जत पे मेरे खड़े सवाल हैं। कपड़े छोटे, संस्कार खोटे, नेता इन पर करें बवाल है। मैं ही असीफा, मैं ही निर्भया, मैं ही दामिनी, मैं ही हर पीड़ा का आभास हूँ। मैं ही कल्पना, मैं ही इंदिरा, मैं ही सायना, मैं ही तो प्रतिभा का एहसास हूँ। नहीं मांगती मैं खैरात, मैं अपना हक मांगने आई हूँ। रख लो तुम ये जमीन, मैं आसमान मांगने आई हूँ। नहीं काट सकोगे अब पंख मेरे, मैं तो उड़ने आई हूँ। नहीं रोक सकोगे मुझे, मैं टूटने, रुकने या रोने नहीं आई हूँ। ना तुम्हारी नौकर हूँ, ना तुम्हारे नाम की मोहताज। अरे मुझसे ये संसार है, मैं यहाँ की ताज। मैं ही वैश्या, मैं ही अप्सरा, मैं ही खूबसूरती, मैं ही बददुआ, मैं ही मीरा, मैं ही राधा, मैं ही राम की मोहब्बत और रावण का अहंकार हूँ। मैं ही शिव की शक्ति, मैं ही तो संसार। धन्यवाद। वेरी गुड। Thank you so much, Pallavi. Next up, we have Riya. Am I audible and visible? Yes, you are. You may now begin with your poem. Good evening, everyone. My name is Riya Manish Gehlot, and I'm a first year BBA student at USLLS. I think women are pretty much capable on their own. They do not have to ask, let alone beg others to give them freedom or opportunities. They can very much pave their own ways and show the ones who stand in the middle of that they have all the caliber that it requires to have at it. What they thrive for and what they need, both in the society and in a professional environment. The title of my poem is Her, and it goes, say that we're empowered enough, equal enough. Say that we have equal say, not a thing rough. Say that we have enough freedom, enough attention, enough rights, says convention. Right, so tell me, elucidate it. If everything is so equal, so enough, and everything is convenient, being nothing tough, yet as she walks by, she's stared upon. Even the CEO, she's glared upon. She's looked upon as an object, a mere doll that can be wrecked, a reject, neglect, and kept in sight. She is taught to be wise and to appear nice.
teased, harassed, pestered, get called. Is this the end of equality so-called? Well then, get low, get down, go stand on your feet, try wearing the shoes that she's supposed to keep. Then shall you know whether it's enough. Then shall you know whether it's equal. The wages, the respect, the opportunities. Would you have ever lived and worked with such boundaries? The day she discovers she's fierce and strong, the day she discovers she's worth it all, full of fire and passion that burns, fragrance of flowers not leaving the thorns, in schools or streets, wearing suits or jeans, working or studying, they're all such queens. Shall be the day when they realize a possibility that it wasn't enough then, it wasn't equal then, and it wouldn't have been if she hadn't stepped in. We all know and have known women that after knowing their worth, what they can do and achieve in their respectable fields, have always been unstoppable since forever. From Gargi, the Brahmavadini, the philosopher, the sage, expounder of Upanishads, the universe and the Veds, to Indira Gandhi, the strong-willed, ruthless and filled with rage, none ancient or modern could keep them in a cage. From Ahilya Bai, the queen of Indore, the absolute ideal ruler, bright and kind galore, to Amrita Shergill, the pioneer of modern Indian art, said to only Bharat belongs to her heart. To begin to see and embrace their scars and to know that they can too shine bright as stars, as a mother, as a sister, as a wife, a daughter, beautiful inside out, they're smarter, they're stronger, to know their caliber, their self, become an explorer. All it requires is for them to trust, for them to believe, invest, and work for her. Thank you so much. Thank you so much, Riya. Next up, we have Rashika Bhasan. Just a second. Am I visible and audible? Yes. You may now begin with your poem. Okay. First of all, hi everyone. मेरा नाम रशिका भसीन है और मैं यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ. हैप्पी विमेंस डे सभी को. आज जो मेरी कविता है वो विमेन फ्रेंडशिप्स पे बेस्ड है, क्योंकि बचपन से ही मुझे ये फीड कराया गया है सीरियल्स के द्वारा या डेली सोप्स या मूवीज के द्वारा कि दो लड़कियां कभी अच्छी दोस्त नहीं हो सकती. अगर दोस्त हैं भी तो उनके बीच में वो जेलसी या वो ऑकवर्डनेस हमेशा रहती है. लेकिन अपनी 19 साल की जिंदगी में मेरी लाइफ में ऐसी कई सहेलियां आई हैं जिन्होंने किसी ना किसी फील्ड में मुझे बहुत कुछ सिखाया है. तो आज मेरी जो कविता है वो उन सहेलियों के नाम, उन सब खूबसूरत महिलाओं के नाम जिनके नाम, तो कविता का नाम ही है सहेली. सदियों से चली आई है ये बात, सदियों से चली आई है ये बात कि औरत ही नहीं आती है औरत को रास. पर जनाब यहाँ किससे अलग है, यहाँ कहाँ औरत औरत की दुश्मन है. सहेली की दोस्ती तो खिलता सुमन है. वो सहेली जो हाथ पकड़कर सड़क पार कराती है, वो सहेली जो बार बार लगातार मेरे लंबे किस्से गौर से सुना करती है, वो सहेली जो मेरी जीत पर खुशी के आंसू बहाती है, वो सहेली जो मुझसे भिड़ने वालों को खूब खरी खोटी सुनाती है, वो सहेली जो स्कर्ट पर लाल दाग देखकर चुपचाप अपना स्वेटर मेरी कमर पर बांधती है, वो सहेली जो दिल की बात मेरी आंखों से जानती है. यहाँ ना कोई जलन है, ना होड़ है और ना ही कोई ईर्ष्या है, तो बस हमारा प्यारा सा इश्किया. और सहेली नहीं सहेलियां हैं, हर एक ने जिंदगी के किसी मोड़ पर बहुत साथ दिया है, क्योंकि अलग होकर भी सबकी एक ही सी हैं कहानियां. कभी रात के अंधेरे में सीटी बजी है तो कभी बस में हुई हैं छेड़खानियां. खैर, सबसे अच्छी यादें वो हैं जब हम साथ में गुनगुनाते हैं. क्रश किसी एक का होता है लेकिन बेसुरा सब हिनहिनाते हैं. कुछ गीत दिल में बसते हैं तो कुछ दिमाग में चुभते हैं, जैसे मैनू लहंगा दे दे महंगा जा मर जाने आ, या फिर कुड़ी कहंदी बेबी पहले जगुआर ले लाओ फिर जे ना मर्जी प्यार ले लाओ. ऐसे कई गानों में बयां है हम लड़कियों की मांगे, और सच भी है, क्यों ना हो.
हाँ, चाहिए हमें वो महंगा लहंगा, वो चमकती जैगुआर, अपने लिए सूट पटियाला और हाथों के लिए चूड़ियां, मगर नहीं चाहिए ये सब हमें किसी की खैरात में। अपनी खूबसूरती को हम निखार सकती हैं खुद की दी गई सौगात से। बस ऐसी ही कुछ खट्टी मीठी यादों जुड़ी हैं हम सहेलियां, इसी ठिठुलियां। ऐसे ही कई खूबसूरत यादगार लम्हों को हमने साथ में बिताया है। एक दिन क्या जनाब, महिला दिवस तो हमने साल के 365 दिन मनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Next up, we have Sakshi Chaudhary. सुप्रभात, मेरा नाम साक्षी चौधरी है और मैं बीबीए की प्रथम वर्ष की छात्र हूँ। अपमान मत करना नारियों का, अपमान मत करना नारियों का, इसके बल पर तो जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर ही तो इन्हीं की गोद में पलता है। मेरी कविता का शीर्षक है नारी शक्ति। छूले हर ऊंचाई तू, छूले हर ऊंचाई तू, किसने तुझको रोका है। बात कल कुछ और थी, फिर से आज मौका है। पंख खोल के हो आजाद, पंख खोल के हो आजाद, डरना इस आसमान से, कमर कस ले आज भी लड़ना है अभी इस जहान से, लड़ना है अभी इस जहान से। ये बंदिशें ये बेड़ियां, ये बंदिशें ये बेड़ियां ना तुझे रोक पाएंगी, तो इरादों को शमशीर कर ये खुद ही टूट जाएंगी। सर झुके थे, सर झुके थे, सर झुकेंगे फिर से तेरे सामने। थी मजाल कब किसी की, तुझे झुका दे अपनी शान में। तूने इतिहास रचा है, तूने इतिहास रचा है अब तक अपने नाम से, अब तक अपने काम से बनी है, बनती रहेंगी गाथाएं तेरे नाम से। तू किसी से कम नहीं, तू किसी से कम नहीं, आज बस ये जान ले बहती धारा को मोड़ दे अपनी ताकत से। प्रचंड तेरी काया, अखंड तेरी शक्ति, प्रचंड तेरी काया है, शिकस्त होके चित पड़े जिसने भी आजमाया है। चीर के फलक को, चीर के फलक को तूने ध्वज ऊंचा लहराया है, ध्वज ऊंचा लहराया है। सर उठा के देख ले वो वक्त फिर से आया है, सर उठाकर देख ले वो वक्त फिर से आया है। मैं इस कविता के माध्यम से उन सभी नारियों को यही बोलना चाहूंगी जो अपने घर से नहीं निकलती हैं। जैसे कि मेरा उदाहरण है, मेरे माँ बाप ने बोला था कि बेटा आप जाके दिल्ली पढ़िए, पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। तो मेरी यहाँ पे जितनी भी नारियां हैं, इवन इस दुनिया में जितनी नारियां हैं, उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि उठिए, अपने लिए कदम उठाइए, क्योंकि जो आप कर सकती हैं वो अपने लिए वो कभी कोई नहीं कर सकता। A woman is like a tea bag. You never know how strong it is until it's in hot water. धन्यवाद। Thank you so much. Next up, we have Shivam. Simran. Srishti. Gursharan. Is there anybody who has not participated and has given their name? I repeat, is there anybody who has given their name and has registered for the competition but has not taken part? All right, so with that, all the participants have recited their respective poems, and before the judges come together to finalize the results, I would request the panel of judges to give the participants some sort of feedback. Good evening, everyone. Good evening, all the dignitaries and their participants.
First of all, I would like to thank the organizer for inviting me, for giving me the privilege to judge the event. And everyone know as pandemic is going on, or almost a pandemic chala hi gaya hai, and for conducting such a recreational event, I will say, एक तरीके से हमारा recreation हो गया on the occasion of Women's Day. ठीक है, women empowerment भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे. I think out of 13 participants, 8 are women. 13 में से 8 वुमेन ने प्रेजेंट किया है, जितना मैंने अभी नोट डाउन किया है, एंड एवरीवन हैज प्रेजेंटेड वेरी वेल. रिजल्ट इज डिफरेंट थिंग, बट पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट. कोई भी जीते कोई भी हारे, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सबने. किसी ने अपनी माँ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, किसी ने फ्रेंड्स के बारे में. ऑल्दो वी हैव टू कवर ऑल वुमेन. ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स स्पेशली टू जुबैर सर फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू एवरीवन. Thank you so much, sir, for your inspiring words. It has been a great pleasure to have such qualified judges to adjudge the competition. And needless to say, this competition has been one of the most interactive ones that have been held at GGSIPU. So with that, I request the judges to take some time to come up to the results. And after they are done, the results can be announced on the spot, if that is okay with the judges. Okay. Are we supposed to send them to you, or how it is? I must say competition is very tough. It's very difficult to find out the best one. Everyone has performed very well. Brinda and Zubair sir, should we send you the Excel file with all the marks and you can compile, or do हाँ सर, आप सर मार्क्स जो है मुझे भेज दीजिए. हाँ जी और सर. उसके बाद जो है तीनों जजेस के जो मार्क्स हैं फॉर एवरी स्टूडेंट, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. And then Brinda, we may announce the results today, possibly, or maybe tomorrow. So we can announce them today as soon as we get the final rank. Perfect. So I'm sure all the judges must have their own experience, and they must have liked the idea of conducting the poetry competition on such an auspicious day, because this Women's Day 2022 has a very important theme. That is in the morning itself, when before the event, I just wanted to look forward as to what is the main thing of this Women's Day 2022. So there I found that yes, it is something very interesting: gender equality for a sustainable world. So it's something very quite innovative and very challenging for all of us also. So poetry is also one of the facilitative mode where we can express our opinion, and where we can understand that as to what is the actual requirement towards the gender equality and gender justice in general also. हाँ सर, आपका म्यूट है. सुगंध सर, आपका शायद म्यूट है. Oh, sorry sir. Yeah, so greatly put by Zubair sir. Some extremely great talent here. Some poets in the future also might come out of this competition. So thank you for creating this event. So this gives increase to creativity among students. So they might explore this idea of being a poet other than doing their activities or completing their course. So thank you for inviting, and thank you for all the participants also. Some great stuff. Akanksha, you wanted to say anything? I'm expected something to hear from you. Very happy International Women's Day to all of you. And thank you so much, Zubair sir, for inviting us to this event. अब एक दिन तो काफी नहीं है, हर रोज एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करना चाहिए हमें, एक दिन नहीं. और सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत ही अच्छे थे जिन्होंने खुद लिखी है पोएम, एंड टफ कंपटीशन तो डेफिनेटली है यहाँ पे, बट थैंक यू सो मच सर.
सर जसदीप सर की शीट आपके पास आई है ना मार्क्स की? जी। आपने मेल कर दिया? हाँ, ईमेल पे भेज दीजिए। अब हमारे जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं दोनों वो देख लेंगे एक बार। और जी सर। ठीक है, thank you so much, sir. I'm immensely grateful to the our honorable judges, Sugandh Bhatia sir ji, Jasdeep Ahuja sir ji, and Akanksha madam. And I'm really thankful to all the participants who participated and shared their views and participated wholeheartedly in our event also. So we'll share the result very soon, and our student coordinators are in the process of Yes, sir. We are still calculating the marks as of now. Okay. So once the calculations are complete and once all the 3 positions are decided, the results would be announced on the poetry competition group itself. Perfect. So I think we may end the meeting as well also, Brinda? Yes, sir. Yes, sir. So thank you so much, all of you. And very nice evening we have, where we're able to interact with all of you and get to know something more about the poetry in general also. So thank you so much once again. Thank you, sir. Thank you, sir. Wish you a great evening, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.